सो हाय एवरीवन, मार्केट आज स्टार्टेड राइट नाउ। आज 28 तारीख, शुक्रवार का दिन, आखिरी ट्रेडिंग सेशन ऑफ द डे ऑफ द वीक। एंड इन दिस ट्रेडिंग सेशन वो मार्केट ओपन होते ही अपने जो प्रीवियस कल के दिन जहां से ओपन मतलब रेजिस्टेंस लिया था वहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है, विच इज अ ग्रेट थिंग एंड दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर आल्सो। कुछ लेवल्स मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं निफ्टी के। लेट मी ऐड द स्ट्राइक प्राइसेस आल्सो, क्योंकि एक्सपायरी चला गया है तो आज के दिन प्रीमियम्स थोड़े हाई हैं as compared to other days. I am going for a out of the money option definitely. So let's observe the chart first. देखो, जो प्रीवियस कल के दिन का रेजिस्टेंस था मार्केट ने वहीं से रेजिस्टेंस ले रखा है सेंसेक्स में। बैंक निफ्टी क्या 800 का ब्रेकआउट करने वाला है? डेफिनेटली इट इज गोइंग टू ब्रेकआउट, बट पहला कैंडल सेलिंग कैंडल है विच इज अ गुड साइन। यहाँ पर मैं कॉल ऑप्शन ऐड करता हूँ विच शुड बी 23,650, 23,700 का कॉल ऑप्शन भी मैं थोड़ा आउट ऑफ द मनी है डेफिनेटली। मतलब इतना आउट ऑफ द होने के बाद मनी, still the premiums are very high. पहला कैंडल तगड़ा रेड कैंडल बना है। बैंक निफ्टी में आसपास 800 का लेवल है। देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि बैंक निफ्टी में यहाँ पर जो सेलर्स बैठे होंगे उन्होंने पोजीशन को एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया होगा। निफ्टी में अभी कंफ्यूजन है ना, कि क्या करे क्या नहीं। तो दिस इज द राइट पोजीशन टू ऐड पोजीशन इन निफ्टी। क्योंकि मार्केट निफ्टी में कंफ्यूजन हो रहा है सिनेरियो एंड बैंक निफ्टी बढ़े जा रहा है। बट हाँ, एक चीज ये है, क्योंकि बैंक निफ्टी अंधा बढ़े जा रहा है, people would be thinking यार निफ्टी पेंडिंग में है, निफ्टी बढ़ेगा आगे से। people would be buying there also. Let's see, अगर इन पॉइंट्स पे आता है डेफिनेटली बाय करेंगे। जो प्रीवियस अपना कल के दिन का स्विंग लो था वहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है निफ्टी। आज के दिन हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं होगी। बैंक निफ्टी में 800 का ब्रेकआउट हो गया है।
देखो लो ऑलरेडी मार्केट दोनों ही इंडेक्सेस में सिनेरियो थोड़ा अलग है। बैंक निफ्टी में 800 का ब्रेकआउट एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुआ है। आई कैन अज्यूम हियर इज तो बायर सेलर दोनों यहाँ पे बैठे होंगे, है ना? तो बायर और सेलर में से आज के दिन जो फ्लैट ओपनिंग हुई है तो वो प्रॉब्लमेटिक बना सकता है। पहले बायर सेलर की देखो, बायर्स यहाँ पर अच्छे से बैठ गए होंगे, रीजन मार्केट चलो ऊपर जा रहा है, सेलर्स अपने पोजीशन को एग्जिट कर रहे होंगे। लेकिन दैट इज द पॉइंट, अगर सेलर कोई होगा भी तो स्टॉप लॉस इन स्विंग्स के ऊपर लगाएगा, तो उनको टारगेट करना बहुत दूर हो जाएगा ना। सो गोइंग फॉर अ पुट ऑप्शन इज अ गुड, या फिर यू कैन से दैट we will wait for the market to come till this. Yes, I think this should be a good choice. अच्छा राउंड नंबर भी है जिसका ब्रेक डाउन करने के बाद मे भी यहाँ पर बायर्स अपना पोजीशन को देखो, बायर्स को डराने के लिए 500 का ब्रेक डाउन सफिशिएंट है सेंसेक्स में। बट वैसे भी वहां अगर सेंसेक्स में 500 का ब्रेक डाउन हो जाता है, यहाँ पर ज्यादा मोमेंटम नहीं हुआ होगा। चलो 500 का ब्रेक डाउन हो चुका है सेंसेक्स में। अरे यार सेव सेव क्यों नहीं हो रहा है? बार बार मैं लाइन लगा रहा हूँ, इट इज नॉट सेविंग। और दिस इज अ गुड पॉइंट टू एंटर, लेट्स तो ये दोनों पॉइंट्स हैं जहां से मार्केट एक टर्न अराउंड दिखा सकता है। सो लेट्स नॉट थिंक लेट्स नॉट थिंक मच, पोजीशन यहाँ पर बना देते हैं 150 quantities and going for market order. Why rejected? Fund balance, okay. Let's see. Should have been done. I need to go a little bit or out of the money. No worries. I've got the price. Okay. Definitely in these kinds of premiums, momentum will be slow, of course. Yes, first I need to put the SL 67.55, the price we have got right now. So accordingly, I'm placing the stop loss. So I have placed the stop loss successfully.
There is a previous swing low here, which Nifty has broken down. And the round number breakdown already happened in Sensex also. तो एक हाई प्रोबेबिलिटी बनती है यहाँ से मार्केट को अपसाइड मोमेंटम कराने की, but if stop loss hits, then I will be exiting, and being happy I will be exiting. That's the crucial thing. The scary thing here is this is the point that everyone should be looking for buying. Look, that's what making me scared about this position. I think stop loss will be gonna hit because price एक बार 58 देख के आ चुका है प्रीमियम. So we have got our essence successfully. I told you, na, this is a very obvious point to for the market to go. थ्री मिनट बचे हुए हैं कैंडल क्लोजिंग में. इस टाइप का हैमर दिखा रहा है मार्केट. I think I should take the risk for the last time because ऑलरेडी मार्केट निकाल चुका है. इसको निकालना था 59.80 का प्राइस मिला. Accordingly, I will place the stop loss at 50. जो भी अच्छे बायर्स होंगे वो क्यों ही मार्केट को 50% रिट्रेस कराएंगे, सोचो आप लोग. कैंसल डेट क्योंकि
देयर इज अ हाई फ्लक्चुएशन एंड फ्लक्चुएशन में हिट होगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक होगा. With this much of volume, it is showing the rejection candle. If I would have fund, I must added one quantity, but it's not happening. Fair enough. I will be exiting if this price goes till 45. Because ये एक पॉइंट है जहां से मार्केट मूव अराउंड हो सकता है. I have already lost the risk management and I am sitting in the hope. सबसे खराब बात यही है. ब्रोकरेज वगैरह देख लेता हूँ 123 रुपीज एंड along with this loss. हाँ, बैंक निफ्टी के हिसाब से देखें तो सेटअप हमारा ये बन रहा था कि बैंक निफ्टी 800 का ब्रेकआउट किया है एंड आफ्टर दैट वी कैन गो फॉर सेलिंग साइड ट्रेड. बट ओनली बैंक निफ्टी को देख के तो ट्रेड नहीं बना जा सकता. निफ्टी जो टाइम क्या कर रहा है वो देखना पड़ता. तो यहाँ पर भी 60% का लेवल है जहाँ से सपोर्ट काइंड ऑफ दिखा रहा है. तो डेली टाइम फ्रेम में कैंडल कैसा बना है ना. दिस इज द बुलिश फुल बुलिश कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे बना है कल के दिन का.
मतलब कल के दिन का एक रिट्रेसमेंट टाइप ऑफ कैंडल था ये। तो आज के दिन क्या हुआ? आज के दिन कैंडल ने अपसाइड तो ब्रेक किया यहाँ से। जो दूसरा कैंडल बनेगा, अगर ये पूरा ऐसे बनता है रेड का, इसका मतलब बायर्स को पूरा खा दे, मतलब तो कंफ्यूजिंग थोड़ा रहेगा मार्केट में, एंड दैट वुड अट्रैक्ट मोर सेलर्स आल्सो। पीपल वुड बी थिंकिंग यहाँ से घूम जाएगा, लेकिन मार्केट विल नॉट टर्न अराउंड। तो आई थिंक एक फुट साइड का देख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग साइड का सिनेरियो दिखाया था मार्केट ने, लेकिन यहाँ पर फिर ये भी तो एफर्ट हो सकता है ना कि रैंडम बायर्स को मार्केट निकाल दे, रैंडम सेलर्स को। ब्रेकडाउन दिखा दिया है मार्केट में ना, तो उस साइड जाना डेफिनेटली नॉट बी ओके। देखो 60% का जो पॉइंट था उसका ब्रेकडाउन दिखा दिया है, एंड वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकडाउन दिखाया है। कोई बाइंग सिनेरियो बने तो तब ना कोई बाय करे। देखो जब अच्छा पॉइंट बना होगा ना, तभी साला ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। कम हो गया। 46 का लगा देता हूँ, चलो ऑर्डर मिल गया 46 का, है ना? 46 का मिला शायद, 45.5 का मिला। फेयर इनफ। प्लेसिंग द स्टॉप लॉसेस आल्सो, दिस इज अ गुड पॉइंट टू गो, ठीक है। ऐसा ही रैंडम ट्रेडिंग नहीं है। 60% का ब्रेकडाउन जब वॉल्यूम्स के साथ दिखा देता है ना, लोगों का परसेप्शन वहां पर ऑलरेडी चेंज हो चुका होता है। ये बायर्स, जो अच्छे बायर्स हो गए, वो मार्केट को डेफिनेटली नीचे नहीं लाना चाहेंगे। That is the 50 का फॉलो। फोर्टी 5.5 का ऑर्डर मिला है। ब्रेक इवन पे ही चल रहा है पोजीशन अभी, इस पोजीशन की बात करें, लेकिन हाँ ओवरऑल पीएनएल रेड में।
बैंक निफ्टी में भी 500 का ब्रेकडाउन हो चुका है। It seems to be a good position for the buyers to enter. If that do not happen, then of course we have to exit. If the momentum happens fast now, then only we can survive. Otherwise, ओटीएम ऑप्शन में शुक्रवार के दिन ज्यादा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। लेट्स सी कितना क्या होगा। देखो ये एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर ठीक ठाक बाइंग आ रही है। एट द मनी के हिसाब से देखो, ये अगर मार्केट का प्लान ऐसा है कि ये पूरा रिवर्स करने वाला है, तो डेफिनेटली आई विल सर्वाइव। अगर नहीं, प्रॉब्लम क्या होगी, तो मार्केट तो जाएगा अपने डायरेक्शन में, लेकिन डिके डुके के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा बहुत ही लॉस कम हुआ है, ज्यादा भी नहीं। मतलब यहाँ पर 20 पॉइंट ऑलरेडी मिल चुका है अगर एट द मनी। दैट्स व्हाई आई नीड सम कैपिटल, राइट, टू सी अ मल्टीफोल्ड return. I definitely need that capital to be there. 60 तक का मोमेंटम पॉसिबल है, बट हाँ, दिस कैंडल नीड्स टू सस्टेन, अदरवाइज तो क्या ही 60 सोचेंगे हम लोग। देखो, इफ माई स्टॉप लॉस स्टेज, मतलब मेरा स्टॉप लॉस अगर मार्केट हिट नहीं करता, देन आई एम रेडी टू होल्ड दिस ट्रेड इनफाइनाइटली व्हेन आई वाज इन प्रॉफिट। 30 points of move has been there in this option, 23,500.
यहाँ पे फ्लक्चुएशन पता हो सकता है, लेकिन 23,500 तक का है, क्योंकि ब्रेकडाउन दिखा चुका है मार्केट ऑलरेडी। मोमेंटम शुड फॉर्म फास्ट, अदरवाइज तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। बैंक निफ्टी में 500 का राउंड नंबर अच्छा वर्क करता है, लेकिन दोनों इंडेक्स में बाकी उनको देख के ट्रेड नहीं किया जाता। व्हाट आई हैव थॉट ऑफ, बैंक निफ्टी में अच्छा चला है, बट इसमें मैं ट्रेड करता हूँ वो ठीक से नहीं चला। दैट्स नॉट एन इशू, लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी में डे हाई तक का इजीली टारगेट मिल सकता है। If I talk about this premium also, it has easily moved 20 points in our direction, क्योंकि ग्रीड फैक्टर यहाँ पर है, तो थोड़ा सा और होल्ड किया जाएगा। इफ आई से ऑनेस्टली, 500 का ब्रेकआउट यहाँ से मिनिमम एक्सपेक्टेड रहेगा सेंसेक्स से, विच इज 60 पॉइंट्स फार फ्रॉम दिस पॉइंट। डीके का फैक्टर आज के दिन ज्यादा तो नहीं रहेगा, एक्सपायरी तो भी नहीं है। दैट्स व्हाई आई थिंक आई विल होल्ड दिस। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ तक का टारगेट बनता है 628। दिस इज द लास्ट पॉइंट जहाँ से वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग आई थी, एंड पीपल वुड बी प्लेसिंग स्टॉप लॉसेस हियर ओनली।
There is a momentum difference between these two premiums. This has already gone two times above 200, but in this premium, I haven't seen 55 yet. मतलब 55 एक ही बार देखा है मैंने. तो ओटीएम में जाने का प्रॉब्लम यही होता है. डेफिनेटली आउट ऑफ द मनी में मोमेंटम थोड़ा कम होगा, बट फॉर सेफ गार्डिंग द कैपिटल दिस इज रिक्वायर्ड. So I'm going to hold this trade for long. Reason I have got a good place to buy, and if this place sustains, the stop loss sustains, then I'm going to hold this trade for the entire day. Because what target I am expecting, it should reach market should reach day high. It might go slow, but it will reach day high. The other indexes also. Let's wait. Let's wait for the trade to get accomplished. If not day high, then this resistance should be achieved, or the price level 23,631 should be achieved. Look at the retracement. Premium is right now at 48, and the premium which has gone to 215 has reached to 190. This is the amount of retracement I am facing right now. There is a probability that this low should not be broken. In next 4 minutes, I will get to know that I am going to hold this position or not. Market is literally telling us if someone is holding, then exit, because I don't think any small retailer would be holding to this much of retracement. But I told you I am going to wait. 2 minutes 24 seconds left for the candle closing. This will be the deciding candle for sure.
Okay, 1 minute left for the candle closing. This should show some sort of rejection from downside. Otherwise, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं बनाने वाला. Also, this turns out to be a crucial position because यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो definitely sellers हावी हो जाएंगे market में. They will not let the market to go higher. That's why. Let's see. Let's wait. What will happen? I will update you the time. Look at the kind of rejection. Just observe the rejection here in the 15-minute candle. If this is the candle, then the if next candle turns out to be this, तो यहाँ पर कौन सा एक अच्छा बाय होगा मुझे बताओ जो कि इस बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के बाद ट्रेड को होल्ड करेगा. डेफिनेटली नॉट. कोई बात नहीं, डिसाइड हो जाएगा कि यहाँ से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है कि नहीं. लेट्स सी, लेट्स ऑब्जर्व द ट्रेड. Finally, market has started moving in our direction, and we have got the price of 61 in the premium. As I told you before, I'm waiting for the day high breakout. Although the target is huge from here, almost of 50 points more. This is what I want. As you can see here, it's 10:34, and market has almost recovered all the losses, as you have seen before. Let's see, does market give the chance to close today's PNL in green? It is not that hard, but what I'm planning, I should hold this position for 3 to 4 days. Finally, seen some sort of profit after the all loss recovery. Let's see, I will wait for the day high breakout. I didn't expect it this from the market. Literally, I'm saying 10 minutes left for the candle closing. I will hold this position till the day high breakout. And at that moment, no matter what will be the price, I will be exiting. If you see in terms of points, from 45 to, to 75, so almost 30 points. And before that, we have lost only 10 to 15 points. This is what risk to rewards help you. अगर आपका एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड होगा, डेफिनेटली 1:2 से तो अधिक ही होगा. अगर अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड होगा, देन डेफिनेटली यू विल सर्वाइव इनटू द मार्केट, नो मैटर ऑफ व्हाट. This is what I focuses on. I will hold this trade till the day high breakout. Before that, it might show some sort of fluctuations and all, but that I am gonna handle for sure. Let's say I will update you when I book the position. Right now, the price is 71 and 10:36 time right now. What I am planning is a little bit higher because, as you know, my trading style, I generally take all from the market. In next 15 to next 8 minutes, it will be decided that I am going to hold this position for more or not. But as there is no as such sign of trouble here, so I think holding this position would be a good choice. No doubt we are running in a crazy profit, but still I am gonna hold this position for more till the day high breakout, which I have planned also. But yes, day high already broken out right now. At any point, I might have to book the position.
Right, can't take any more risk here क्योंकि डे हाई का ब्रेकआउट हो चुका है अभी. एंड फर्दर कितना क्या मूव होगा? हाँ, डे हाई का ब्रेकआउट के बाद एक जनरल जो अपसाइड का मोमेंटम होता है वो होगा ही डेफिनेटली. लेकिन हाँ, मोमेंटम पेंडिंग है अभी, बैंक निफ्टी में भी पेंडिंग है, निफ्टी वगैरह भी. निफ्टी में एज सच कोई मोमेंटम नहीं हो सकता. हाँ, देखो, होने को तो यहाँ पर 23,800 तक का मोमेंटम पेंडिंग है, लेकिन बिना रिट्रेसमेंट के तो नहीं होगा. और एक रिट्रेसमेंट हमें निकालने के लिए सफिशिएंट है मार्केट को. ठीक है, लेकिन हाँ, सेंसेक्स का डे हाई क्योंकि पेंडिंग है, दैट्स व्हाई आई एम होल्डिंग दिस पोजीशन. एंड ऑल्सो बैंक निफ्टी में अपने ग्राउंड नंबर आसपास ही है. लेट्स होल्ड, लेट्स नॉट पैनिक हियर. नो डाउट जितना टारगेट था उतना मिल चुका है हमें ऑलरेडी, बट सेंसेक्स में क्लियर कट पेंडिंग है. ठीक है, एज यू कैन सी आई एम पुटिंग अ ट्रेंड लाइन. यहाँ तक का टारगेट पेंडिंग है सेंसेक्स में, दैट्स व्हाई आई एम होल्डिंग दिस पोजीशन. In this premium, as you can see, we are seeing it from 181. So this is what happens if you have a good capital. 76 rupees of move in one premium. Can you imagine what could be the PNL till this point? So holding is not an issue for me, but having that much of patience to buy or that much of fun to buy this kind of premium is important. So I'm gonna hold this position. In the next 4 minutes, uh, it will be decided that will I hold more or will I exit this position. Let's wait for 4 minutes. Let's wait for this candle closing of 15 minutes. Then after I can decide something. Hmm, oh, okay. Premium is right now at 77, and we have got the target in Sensex also. Very close, almost day highs. In Bank Nifty, the momentum is pending. So, what I am thinking right now, should I wait for Bank Nifty to go or should I exit the position right here because we are running at a good profits, right? And it is also, look at this price, what should I have done? कि लोग यहाँ पर 50% का क्योंकि सेलिंग लेवल है, लोग यहाँ पर सोच रहे हो कि मार्केट कहीं से एक रिट्रेसमेंट दिखा दे, नीचे आ जाए, तो उनको नो डाउट मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन उनको डराने के लिए या फिर उनको अपने पोजीशन को ऐड कराने के लिए काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन और रिजेक्शन मार्केट दिखा सकता है. एंड ऑल्सो ऑलमोस्ट सेंसेक्स में भी ब्रेकआउट होने ही वाला है.
तो ज्यादा रिस्क ना लेते हुए यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट करना would be a better choice. Look at the glitch in Zerodha. इतना बड़ा ब्रोकर हो के भी अगर इसमें ग्लिच होगा तो लोग कैसे कहाँ पर पोजीशन बुक करेंगे. I'm placing this limit at no doubt the momentum is happening in our direction, but the premiums are not increasing at that pace because that is the OTM option, right? So in OTM option, the momentum should not be always in your direction. I think booking this would be a good option right here. Let's see if I get the price or not. Place the price of 79 here. This high is also broken, right? एंड सेंसेक्स में जितना टारगेट चाहिए था उतना ऑलरेडी मिल चुका है. ये रिजेक्शन है आप साइड से, है ना. प्रीमियम में देखो एंड स्पॉट में देखो आप लोग तो. हाँ, ओनली वन थिंग बैंक निफ्टी में लेकिन मोमेंटम पेंडिंग है. ओनली सेइंग द प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, बुकिंग इट आल्सो रिक्वायर्ड. ऐसा तो छोड़ नहीं सकता कि 800 तक का ब्रेकआउट यहाँ से पेंडिंग है सोच के. बुक करना भी जरूरी है प्रॉफिट्स को. तो 10 minutes left for the client to close it. I have changed this to 80. So I have got the 80 price also. फर्दर मोमेंटम कैन हैपन बट क्योंकि यहाँ पर ओटीएम ऑप्शन था तो बुक करना भी जरूरी था. एंड इट इज नॉट लाइक कि मार्केट ने मुझे दिया है यहाँ पर. सो दैट्स व्हाई